Bismillahirrahmanirrahim. Hi friends, this is Bashir Ahmad and you are watching my educational channel. Today we are going to learn about mode of communication. First of all, we will discuss what is mean by mode of communication. Modes of communication can be defined as the way in which data is transmitted from one device to another device is known as mode of communication or transmission mode or communication mode. It defines the direction of the flow of information between two communicating devices. Each communication channel has a direction associated with it, and transmission medium provides the direction. Therefore, the transmission medium is also known as directional mode. It is basically a method of transferring of data between two devices. It means that communication mode is the way in which data is transmitted from one place to another place. जब दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो ये डिवाइसेस मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं जो हमें डेटा फ्लो की सिमत यानी डायरेक्शन भी बताती है और वेज भी बताती है. There are three communication modes based on the direction of exchange of information: simplex, half duplex, full duplex. And there are two communication modes based on the synchronization between the transmitter and the receiver: synchronous transmission mode and asynchronous transmission mode. Simplex. Simplex is the data transmission mode in which the data can flow only in one direction. That is, the communication is unidirectional. In this way, a sender can only send data but cannot receive it. Similarly, a receiver can only receive data but cannot send it. It is similar to a one-way street communication. Communication of keyboard input to CPU, communication of mouse input to CPU, communication of CPU output to monitor, communication of computer to printer, communication of scanner to computer, communication of radio, communication of television are the best example of simplex. इसकी मिसाल एक तरफा सड़क की है जहां ट्रैफिक एक तरफ से तो जा सकती है लेकिन दूसरी तरफ से ट्रैफिक मुस्तकिल तौर पर नहीं जा सकती. यह आप सिंप्लेक्स की डायग्राम देख सकते हैं जिसमें दो डिवाइसेस हैं, डिवाइस 1 एंड डिवाइस 2. डिवाइस 1 सेंडर है और डिवाइस 2 रिसीवर है. यहाँ डेटा की फ्लो जो है वो सेंडर से रिसीवर की तरफ है लेकिन रिसीवर से डेटा वापस सेंडर की तरफ नहीं आ सकती. हाफ डुप्लेक्स. Half duplex is the data transmission mode in which the data can flow in both directions but in one direction at a time. It is also referred as semi-duplex. In other words, each station can both transmit and receive the data, but not at the same time. When one device is sending, the other can only receive, and when one device is receiving, the other can only send. This type of data transmission mode can be used in case where there is no need for communication in both directions at the same time. Walkie-talkie is the best example of half duplex. आपने पुलिस वालों के साथ वायरलेस सीट देखा होगा, वो भी हाफ डुप्लेक्स पर काम करता है. उस वायरलेस सीट पर एक तरफ से तो कॉल आता है लेकिन दूसरी तरफ से बात नहीं हो सकती. अगर सिपाही दूसरी तरफ से कॉल करना चाहता है तो एक बटन दबाकर दूसरी तरफ से कम्युनिकेशन कर सकता है. आप हाफ डुप्लेक्स का डायग्राम देख सकते हैं जिसमें दो डिवाइसेस हैं, एक डिवाइस 1 है और दूसरा डिवाइस 2 है. जब डिवाइस 1 डेटा सेंड करता है तो इस वक्त डिवाइस 2 सिर्फ डेटा रिसीव कर सकता है, सेंड नहीं कर सकता.
और इसी तरह जब डिवाइस 2 डेटा सेंड करता है तो डिवाइस 1 डेटा रिसीव कर सकता है, सेंड नहीं कर सकता। Full duplex. Full duplex is the data transmission mode in which the data can flow in both directions at the same time. It is bidirectional in nature. It is two-way communication in which both the station can transmit and receive the data simultaneously. Full duplex mode has double bandwidth as compared to the half duplex. The capacity of the channel is divided between the two directions of communication. This mode is used when communication in both directions is required simultaneously. For example, a telephone network in which both the person can talk and listen to each other simultaneously. आप फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन का डायग्राम देख सकते हैं जिसमें दो डिवाइसेस है, एक डिवाइस 1 और दूसरा डिवाइस 2। डिवाइस 1 सेंडर भी है और रिसीवर भी है, इसी तरह डिवाइस 2 सेंडर भी है और रिसीवर भी है। दोनों डिवाइसेस यानी डिवाइस 1 और डिवाइस 2 एक साथ एक दूसरे को डेटा सेंड भी कर सकते हैं और दोनों डिवाइसेस डिवाइस 1 और डिवाइस 2 एक साथ डेटा रिसीव भी कर सकते हैं। Synchronous data transmission mode. Synchronous data transmission is a data transfer method in which a continuous stream of data signal accompanied by timing signal it helps to ensure that the transmitter and the receiver are synchronized with each other. Special send character goes before the data being sent. This communication method is mostly used when a large amount of data needs to be transferred from one location to another location. Synchronous transmission send data in the form of block. Block mean several bytes. Synchronous transmission is fast. Synchronous transmission is costly. The time interval of transmission is constant. Synchronous transmission does not have a gap between the data. Chat classroom, video conferencing, telephonic conversation, face-to-face interaction are the example of synchronous transmission mode. आप सिंक्रोनस ट्रांसमिशन मोड का डायग्राम देख सकते हैं जिसमें दो डिवाइसेस है, एक सेंडर है और एक रिसीवर है। इस तरीके में सेंडर और रिसीवर एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइजेशन के बाद कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं, यानी डेटा सेंडिंग और डेटा रिसीविंग स्टार्ट करता है। एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन. Asynchronous transmission is also known as start-stop bit transmission. Send data from the sender to receiver using the flow control method. It does not use a clock to synchronize data between the source and destination. This transmission method sends one character, mean one byte at a time. In this method, before the transmission process begins, each character sends the start bit. After sending the character, it sends the stop bit. With the character bit and start and stop bits, the total number of bits become 10 bits. Asynchronous transmission sends data in the form of character or byte. Asynchronous transmission method is slow. Asynchronous transmission is economical. The time interval of transmission is random. In asynchronous transmission, there is a gap between data. Email, radios, and television are the example of asynchronous transmission. आप asynchronous transmission के डायग्राम देख सकते हैं जिनमें दो डिवाइसेस है, एक सेंडर है और एक रिसीवर है, जिसमें दो कैरेक्टर के ट्रांसफर का अमल दिखाया गया है। दोनों कैरेक्टर से पहले स्टार्ट बिट लगाया गया है और दोनों कैरेक्टर के आखिर में स्टॉप बिट लगाया गया है और दोनों कैरेक्टर के दरमियान गैप भी दिखाया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।
with the next video.